Hello everyone, good morning. Welcome to our channel TimeIT Investor. Today is 23rd July. So guys, कल काफी लेट हो गया था मुझे ऑफिस से almost I think late night delivery, so I was not able to make a video. Okay. So nonetheless, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमको दो opportunities मिलती है, एक जिस दिन रात को और अगले दिन सुबह. Okay. So I'm compensating for that for making video today morning. Okay. Let's quickly start with the analysis. ओके सो गाइज आई थिंक आज का नॉट आज का कल का मार्केट आई थिंक काफी एक्सपेक्टेड था. ओके और काफी रेंज बाउंड था और एज पर अवर लेवल्स भी था. तो एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट पार्शली इट वेंट एज पर माय एक्सपेक्टेशन. बिकॉज हम देख सकते हैं गाइज, जैसे इसने 25,176 के टॉप बना है. यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता 25,200 के आसपास आएगा. ओके they can enter, then I can enter the 25,300 position aggressively. लेकिन वो हुआ नहीं और यहीं से रिवर्सल चालू हुआ. ओके लेकिन जो सेकंड कंडीशन हमने डिस्कस किया था, द सेकंड कंडीशन व्हिच वी डिस्कस दैट इट विल टेक द होल्ड अराउंड 25,050. ओके 25,050 के आसपास उसने सपोर्ट लिया और होल्ड करेगा यहाँ पे. और एग्जैक्टली 25,050 के पास उसने सपोर्ट लिया. ओके एंड इट एंडेड अराउंड दैट लेवल ओनली, सपोर्ट लेवल ओनली. तो गाइज हम लोग ने ये दो चैनल्स बनाए थे. ओके आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 वीक से दो चैनल के बीच में ही खेल रहा है मार्केट एज पर एक्सपेक्टेशन. ओके सो our मार्केट स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. अभी हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, यही लेवल्स फॉलो करना है और इसको प्ले करना है बेसिकली. ओके तो जैसे हम देख सकते हैं ओपन अप हुआ, फिर नीचे आया, उसके बाद 25,050 के आसपास आया. ओके यहाँ पे क्लोज हुआ. ओके और इफ यू सी द गिफ्ट निफ्टी एज वेल, गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा था आई थिंक इन द मार्केट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आज भी मार्केट जैसे गैप अप ओपन होने की कोशिश करेगा and maybe around 25,100 or 120 and again it will start its downward journey. तो मतलब आज का एक्सप्रेशन ये रहेगा, एक तो it will remain between this range, very narrow range of 25,100 to 25,050 or it will break the 25,050 and start the downward journey around 24,900. मतलब 25,050 अगर ब्रेक करता है दोस्तों, ओके तो 24,900 हम देख सकते हैं आज के आज. उसकी पॉसिबिलिटी भी काफी हाई है बिकॉज इंडिया विक्स इज रनिंग वेरी लो. ओके जैसे मैं 2 दिन पहले मैंने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ निफ्टी बिहेव्स इन टर्म्स ऑफ इंडिया विक्स पैटर्न. तो आई थिंक सिमिलर पैटर्न रिपीट होते हुए दिख रहा है हमको. काफी इंडिया भी विक्स भी काफी नीचे गिर गया है. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू we can expect that that market to again go down as India VIX increases. जब वो नीचे जाएगा मार्केट गए, सो जो लोअर लेवल रहेगा, फर्स्ट लेवल will be 24,750, then the first low level will be 24,900, second 24,750 and third will be 24,550. That's the expectation. और हम प्रीमियम भी देखेंगे गाइस. ओके प्रीमियम भी इतने कम हो गए हैं पी के, दैट इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी ऑफ द बायर. और कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी रहेगा. ओके और जेन स्ट्रीट वगैरह बोल दिया हम लोगों ने इस केस में. ओके सो अगर इनको अगर करना भी होगा तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पुट के ऑप्शंस तो सस्ते मिल रहे हैं. ओके अगर किसी को कोई बायर है, मैं तो बाइंग में जाता नहीं हूँ, लेकिन किसी को बाय करना है, ही कैन एक्यूमुलेट दैट एंड ही कैन वेट फॉर द ब्रेक डाउन. तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है. Okay, for the buyer people, I think because this is a good setup, I think in terms of buying perspective. ठीक है तो आज के लिए बेसिकली 25,230 जब तक ब्रेक नहीं होता है ऊपर साइड में, वी विल नॉट गो बुलिश, एटलीस्ट आई विल नॉट गो बुलिश. और 25,050 ब्रेक डाउन होता है, देन आई विल गो थिंक फॉर द बियरिश साइड अराउंड 24,900. ओके इफ आई वांटेड टू ट्रेड द इंट्राडे. ओके दैट इज द प्लान फॉर टुडे. ओके सो लेट्स क्विकली चेक द ओपन इंटरेस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो पीसीआर 0.7 है गाइस, सो वी आर स्टिल इन बेरिश जोन. ओके तो ओवरऑल गाइस हम देखें यहाँ पे, ओके ये पूरा बेरिश जोन ही है. जब तक ये 25,230 ब्रेकअप नहीं होता हमारा का, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, तब तक कि हम लोग बियर जोन में है. तो आई थिंक वी शुड अवॉइड बीइंग बुलिश. ओके सो दैट्स एटलीस्ट माय स्टडी ओवर हियर. ओके और हम यहाँ पे एफआई की सेलिंग भी देखेंगे. ओके कल भी सेलिंग, अभी कल तो आई थिंक 3,549 सेलिंग किया था. इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश ऑप्शन है, पुट में बेरिश है, एफआई में बेरिश है. लेकिन गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो काफी ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है. जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में थे कल 47,000 और यहाँ पे बुलिश था. तो कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, राइट.
तो यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आज तो रेंज बाउंड ही ओपन होगा, मतलब ज़्यादा गैप अप नहीं रहेगा, मे बी 30-40 पॉइंट गैप अप रहेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल फर्दर स्टार्ट अ डाउनवर्ड जर्नी टुवर्ड 25,050 और 24,900 एटलीस्ट। ऑप्शन डाटा से तो यही लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि 25,100 के ऊपर काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग भी है यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे, और काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग भी है, और सपोर्ट हमको दिख रहा है 25,000 के आसपास। ओके, एंड इफ दिस सपोर्ट ब्रेक्स, ओके, देन वी कैन सी इट कैन गो अराउंड 24,900, बिकॉज हम देख सकते हैं 24,900 के यहाँ पे the put option, okay, put OI has decreased. So what basically this means, that if I'm selling option around 24,900, okay, and this is getting exited, so this means being an option seller, I'm no longer confident that market will hold this level of 24,900, because let's say market breaks down, it comes to 24,900, okay, then my option will come into the money. So being an option seller, मुझे तो नुकसान होगा, right? तो ये काफ़ी जो हमारी अर्ली स्टडी है कि 24,900 के आसपास जा सकता है बेस्ड अपॉन कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज अलाइनिंग विथ 24,900 स्टडी ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो ये जो स्टडी है ये हमारे ओपन से अलाइन भी कर रही है। सो आई थिंक मोस्टली मार्केट आई थिंक रेंज बाउंड ओपन होके डाउनवर्ड साइड जर्नी जाएगा अराउंड 24,900। ओके, हाँ, अगर 24,900 भी ब्रेकडाउन होता है, सो नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,750, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे आज कम दिख रही है। Okay, that can be maybe on the expiry day. Okay, so that's it I think for the Nifty analysis, guys. Okay, let's quickly go ahead to the my next okay, my position. So जैसे आई थिंक मैंने डे फॉर yesterday मैंने अपने पोजीशन डिस्कस किया था, आई वाज रनिंग इनटू प्रॉफिट ऑफ 900 और 980 रुपीस। ओके, आई हैव मेड द मॉडिफाइड बियर काउंटर, बट जैसे मैंने बोला था कि अगर 25,200 के आसपास आएंगे तो आई विल एंटर इनटू दिस सी पोजीशन फॉर द सेल साइड। So basically, guys, जैसे ही market open up हुआ around 24, 20,176, it was opened. Okay, so I modified my trigger order to maintain that if it remains about 25,100 for sustained amount of time, I will enter the 25,300 call. So that's what I did. Okay, and second condition was that I will exit my P position. Okay, I will exit my P position, convert it to the iron condor. Okay, you can go ahead and check my yesterday video on that. सो मैंने वही किया, क्योंकि पी के ऑप्शन गाइस इतने लो हो चुके हैं ना, एक्चुअल में इट वाज नॉट एट ऑल गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो ना। 3-4 रुपए के लिए आई थिंक मैं आई कैन नॉट रिस्क टू कीप दिस पोजिशन। ओके, क्योंकि मैंने 3 लॉट थे, तो मैंने क्या किया, पहले तो 3 लॉट एग्जिट कर लिए, देन आई एंटर्ड इनटू, आई कन्वर्टेड दिस स्ट्रेटजी इनटू द आयरन कॉन्डोर. So you can see this is a range which I will be playing around, and I am already into the profit of 2,378. So आज का प्लान ये रहेगा गाइस, ओके, कि अगर मार्केट मेरे ये रेंज के आसपास भी ओपन होता है ना, आई एम हैविंग प्रॉफिट अराउंड 3,500 और 3,000, somewhere 1.4 1.5% profit, I will exit this strategy. Okay, because option premium are so low. Okay, so I don't want to take any risk because VIX is also running very low. तो जैसे मैंने विक्स का चार्ट मैंने मेंशन किया था 2 दिन पहले, ओके, इन माय वीडियो, सो वी कैन सी द पैटर्न व्हेन द विक्स इज सो लो, ओके, ड्यूरिंग दैट पॉइंट एनी स्पाइक इन द विक्स विल लीड टू द मार्केट फॉल, ओके, एग्रेसिवली इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और अभी भी यही स्थिति रिपीट होते दिख रही है हमको। ओके, सेम सिचुएशन वी कैन सी इज गेटिंग रिपीटेड, so I will be very cautious. I will be more comfortable holding the bearish position, okay, with the option which is having a premium to decay. तो अगर आज मैं देखूंगा कि मुझे कॉल के ऑप्शंस भी मुझे ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज विक्स काफ़ी कम है गाइस। ओके, सो इट हेल्प्स ऑप्शन सेलर, बट ऑप्शंस excuse me guys, options values are also very low since we are closer to expiry. So, depending upon the opening in the first half an hour, I think I will take the call. I think I will exit the strategy, and if it breaches 25,050, okay, I will put up a trigger order to enter the call position for 25,300 for the next week option strategy, next week's option expiry. So that will be my plan, which I have not mentioned to this PPT, guys. Okay, I don't want to put everything PPT. I also want you to watch the video and learn the psychology through which I am operating. Okay, so until this, because we it's like a homework, guys. Okay, we cannot so whenever we go to college, okay, or we do some job in office, okay, 10% is training, 90% is on job training. Okay, so similarly in that way, I think I can put everything in PPT, but you will not learn anything unless you preach it or do the paper trading or you learn yourself. Okay, so that is my today's strategy for Nifty.
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ओपन पोजीशन. ओके, एलएनटी पोजीशन गाइस, जैसे मैंने कहा था ये प्रॉपर्ली वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है. So it opened around 3,500 and went as high as 3,509. Okay, during that point of time, I shifted the 420p to the 450p as per our yesterday discussion. Then second condition was shifting the 3520, shifting the 3520 C to 3580. That didn't went in because it didn't hit the target of 3,520. So ये पोजीशन अभी भी ऐसे ही है. ओके, आई थिंक अगर मार्केट आज थोड़ा सा गैप ओपन होता है तो ये वाली पोजीशन एटलीस्ट मैं एक पोजीशन शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी दिस प्रीमियम डीके हैज हैपन हेवीली ओवर हियर. सो आई थिंक 3,560 अराउंड आई थिंक मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा 3,520 की जो सी ऑप्शन है, और एल्स आई विल कीप इट एज इट इज इफ इट स्टेज बिलो 3,500. Okay, because option premium has kicked in now into the stock. So by end of next week, by end of this week, I think we will be entering into the profit zone. That is the expectation. Okay, but guys, this is a good example which we can see. डे वन से हमने एक्सपेक्टेशन क्या रखे थे, हम लोग प्रॉफिट में थे. मार्केट वेंट अगेंस्ट अवर एक्सपेक्टेशन. मैंने एक्सपेक्टेशन था 3,500 के ऊपर पे होल्ड करके आई थिंक इट विल गो हेड, बट आई मिस्ड वन पॉइंट कि एक गैप रह गया था अराउंड 3,460 टू 470 के बीच में. दैट आई मिस्ड ड्यूरिंग माई एनालिसिस. और बराबर वो गैप क्लोज करने के लिए मार्केट नीचे आया. वो मार्केट का गैप क्लोज करने के बाद मार्केट ट्राई टू अटेम्प्ट टू गो अहेड 3,500. 2 से 3 बार उसने अटेम्प्ट किया है, बट इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग अराउंड 3,450. ओके, ये मेरी पोजीशन है अभी. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव मॉडिफाइड एंड एडजस्टेड आवर स्ट्रेटजी, okay, to reduce the loss from 8,000, 9,000 to 3,800 as of now currently running. So based upon today it will get further reduced. So this is how I think how I'm doing, what is my thought process, that's I'm sharing in my video on day-to-day basis. If you are new to my channel guys, okay, you can go ahead and check these videos. It is there into the Nifty or daily view playlist, and you can see that what was my plan, what was my thinking, how I manage my trades, okay, without sitting in front of screen. Okay, so that will be a good learning as if anyone is trying to learn this thing. Okay guys, हमने ये we need a system. Okay, अगर हमने हमारा system set कर लिया ना, okay, we can earn money from stock market. Okay, and part time as well. There is no need to follow it, I think, sit in front of screen on this full time. Okay, if you are especially into the job of like 9 to 5 or you are working somewhere. Okay, so अच्छी strategy guys. और हम लोग आज के ज़माने में अगर हम लोग स्टॉक मार्केट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, सो हम लोग रेस में पीछे, we are falling behind. Okay, so but we need to just ensure that we are in the top 1.5% of the people who makes profit. Okay, that's the main goal over here. Okay, okay, so that's it for the anti trade guys. Let's move ahead. So my swing trade plan, I think this was yesterday. I think day before yesterday it was 596. I think and yesterday I think it was around 590. अदानी पावर अगर ये 550 के आसपास आएगा तो इसमें एंटर करूंगा मैं. कैंप सर्विस आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे क्लोज हुआ है. Last and turbo, you can see guys, okay, day before yesterday it was 3,502. Now I think it has again fallen to 3,464. So amount of volatility बहुत ज़्यादा है यार last and turbo में. I was not expecting that, okay, but I don't know. But options support and resistance are holding stable around 3,500. Okay, so that time I think good thing for me at least. Then for Dr. Reddy's lab, as expected, it has gone down to 1240. अगर गाइस ट्रेड डील में अगर कुछ इशू आएंगे यूएस और इंडिया में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग डॉक्टर रेड्डी लैब टू फर्दर फॉल टू अराउंड 1220 और 1200 रुपीज. सो दैट विल बी परफेक्ट बाय एटलीस्ट फॉर मी टू डू द स्विंग ट्रेड. तो गाइस जब मैं स्विंग ट्रेड बोलता हूँ तो इट कैन बी 1 मंथ, इट कैन बी 3 मंथ्स, इट कैन बी 6 मंथ्स. ओके, तो मेरा प्लान वही रहता है कि आई विल एंटर दैट वे सच अ वे दैट की मिनिमम 3 मंथ्स to 6 मंथ के पीरियड तक मैं होल्ड करूंगा. ओके, वो मेरा रहता है. हाँ, अगर एक महीने में टारगेट अचीव हो रहे हैं मेरे, जैसे एक महीने में मुझे 8% 9% रिटर्न मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स आई विल डू द partial profit booking. Okay, if it is a stock which I intend to hold it for the long term for my increasing my portfolio size. If it's just a trading stock, for example Adani Power में सिर्फ trading stock रहेगा. Okay, so even the 5% 6% अगर मैं 2-3 दिन में मिल रहा है तो I will exit that. So that is a psychology guys. Okay, that how you wanted to see swing trade. Okay, so for the more details guys, you can check my video swing trading blueprint. Okay, that will give you the insight how I select the swing trading and how I
ensure that these stocks which I'm selecting, these will perform. Okay, so I think that's it from my side, guys, today. If you're new to my channel or if you're my regular subscriber, please ensure that to watch the video completely and take the benefit of a learning. And please do subscribe, like, share, and if needed, please comment as well if you have any queries and if you want me to modify any content. Thank you very much. Have a profitable day today. See you in the evening. Bye bye.